Hello, good evening. Good evening, boys and girls. Am I audible and visible? Tell me, please, am I audible and visible? Give me the clearance, please, about the audibility and visibility. Okay, very good. So, very good evening to all of you. Welcome to PW platform Gate Wallah segment. This is Dr. Khalil Khan. Welcoming you all to this series, fast track series, or you can say crash course in the subject of operating systems. Okay. So I think everything is fine. तो start करेंगे बच्चों आज का session. So I hope you all people have come for the operating system course in the fast track mode. तो start करने से पहले कुछ discussion करेंगे with regard to the coverage. हम कैसे पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं इस कोर्स में, ठीक है? And the modality, the teaching approach, and everything. So as you see, this is a fast track course or this is a crash course. So I expect basically कि आपने ऑपरेटिंग सिस्टम कोर्स पहले से ही कहीं ना कहीं पढ़ा होगा. दैट इज व्हाट इज माय एक्सपेक्टेशन, फर्स्ट एक्सपेक्टेशन. Because we are not going to start from scratch, even though we are going to cover all the topics. हाँ, सब उत्तम मौर्य and other people, I will talk about it. ठीक है? So first point, I'm assuming that आपने operating system course either at the level of GATE या फिर आपने पढ़ा होगा शायद college level पर and aspiring for GATE. ठीक है, Goku. You have studied operating system for SEM exam. That is fine, that is good. अब रही बात whether will this be sufficient enough if you have not prepared for GATE to write GATE exam. Will it be sufficient enough or not? एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है. हम उसे एड्रेस करने की कोशिश करेंगे. लेकिन सेकंड पॉइंट आपको ये कहना है, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट this course will definitely act as a very good revision course. अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम गेट के लिए पढ़ा है पहले और अब कुछ रिवाइज करना चाह रहे हो तो देन फैंटास्टिक, दिस विल बी अ वेरी गुड कोर्स, आई वुड रिकमेंड. ये एक बात है. और दूसरी बात ये है कि बाज स्टूडेंट्स दे आर बेसिकली ट्राइंग टू आस्क मी कि सर अभी 2 महीने का टाइम बाकी है, मेरे 4 या 5 सब्जेक्ट अभी हमने कंप्लीट नहीं किया है. ठीक है. सो फॉर दो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना पूरा कोर्स अभी पूरा सब्जेक्ट्स गेट के लिए नहीं पढ़े हैं, तो ये कहूँगा कि इफ़ यू फील दैट विद इन दिस लास्ट 2 months ऑफ टाइम आप वो बाकी के जो 4-5 कोर्सेज जो छूट चुके हैं आपसे, आप नहीं पढ़ पाए हैं, तो ये फास्ट ट्रैक कोर्स में आप कुछ हद तक जस्टिफाई कर सकते हो. इफ नॉट द होल सब्जेक्ट, some topics, some good number of topics in every domain of operating system, every module of operating system आप टच अपन कर सकते हो. क्योंकि बच्चों मैं हमेशा ये कहता हूँ कि don't leave any subject as far as GATE exam is concerned. It is always desirable to prepare at least 50 to 70% of the course if you have not prepared the full course. तो उन students के लिए जिन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं पढ़ा है गेट एग्जाम और दे आर राइटिंग गेट 2024, then this course definitely will be beneficial for them if you can prepare for some topics rather than leaving the whole course. तो उनके लिए बहुत ज़्यादा
यूजफुल रहेगा, यही मैं कहूँगा। क्यों? बिकॉज बच्चों पॉइंट इज वेरी सिंपल, ये फास्ट ट्रैक मोड में है। हम एक जो कोर्स एक्चुअली व्हेन वी रन इन द रेगुलर बैच 60 to 70 आवर्स, समटाइम 80 आवर्स, वो हम यहाँ पर लिमिटेड टाइम में कवर नहीं कर सकते हैं। तो पूरे के पूरे टॉपिक्स हम जस्टिफाई ऑब्वियसली नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसलिए मैंने कहा रिवीजन के लिए काफ़ी नंबर वन रहेगा आपके लिए, नंबर वन बेनिफिट रहेगा। एंड एज आई सेड, दोज हु आर लीविंग द टॉपिक्स, आई मीन लीविंग द सब्जेक्ट ऑल टुगेदर, तो उन्होंने भी अगर रेगुलरली अटेंड कर लिया ना, तो आई कैन गारंटी यू दैट few of the topics of operating system you can definitely master from this course. That will be a good takeaway from this course, I would say, rather than leaving the whole subject. तो मैं उन सभी लोग बच्चों से अपील करूंगा जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं कर प्रिपेयर कर पाए हैं गेट एग्जाम के लिए, वो अटेंड कर लीजिएगा कोर्स। सम टॉपिक्स यू विल गेन एक्सपर्टीज। लकीली अगर फर्ज करिए मान लीजिए एग्जाम में वो टॉपिक्स में से ही अगर आपको क्वेश्चंस आ गए, यू आर वेरी लकी। ये बात मैं करना चाह रहा हूँ, राइट? So Ninja, I mean, see how many lectures we are saying. Exactly we can't say. We will try to cover up as many as possible, keeping in view of the time constraint. Because other subjects are also going on, other subjects also have to start. So let us not bother about the number of lectures, let us bother about the quality. जितना हो सके हम justify करने की कोशिश करेंगे in limited amount of time. और मेथोडोलॉजी ये होगी कि स्टार्ट तो करूंगा मैं बिल्कुल, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू टच अपॉन ऑल द टॉपिक्स, एवरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। वहाँ पर हम टॉपिक देखेंगे, कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसकी मोडालिटी देखेंगे, और उसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स PYQs भी हम डिस्कस जरूर करेंगे, राइट? सो आई विल कवर अप द थियोरी, आई विल कवर अप द कॉन्सेप्ट, and I will cover up the important problems also, and if possible I will also try to give you some important questions as well for preparation. फिर उसके बाद अगर आपको कुछ doubts वगैरह हो, if you are unable to ask the doubt here, right, then you have my telegram channel, official PW telegram channel. आप ज़रूर मुझसे वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हो, वहाँ पर आप मुझसे बात कर सकते हो। You can directly DM me, contact me, and you can seek clarification. We can seek clarification. ठीक है ना? यशस्वी, yes. Even if you have not studied operating system earlier, I would recommend, because मैं limited time में maximum possible कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप ज़रूर इसे फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा, प्लीज़ कीजिएगा। और बच्चों हर क्लास में, every class I will also leave at the end maybe some 5 to 8 minutes, 8 to 10 minutes of time exclusively for doubt clearance. तो आपके जो भी डाउट्स हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के डाउट्स होने दीजिए, या सब्जेक्ट के डाउट्स होने दीजिए, या कोई एकेडमिक डाउट भी होने दीजिए, यू कैन ऑलवेज आस्क। हाँ, टेलीग्राम चैनल नेम मैं मलाया परिदा, यू ट्राई टू रिमाइंड मी एट द एंड। लास्ट में मैं अपना टेलीग्राम ID लास्ट पार्ट ऑफ द सेशन में दे दूंगा। यस, आई थिंक फरहान खान, यस यू आर राइट। So I think camera is slightly disturbing. I'm also able to see that. I'm also able to see that. I'll just try to inform. I'll just try to inform the person. Wait just 2 seconds. I'll just try to inform. Just a second, please. Okay, boys. I have informed the concerned team.
they will take necessary action, maybe not today, later at the end of the class. Okay बच्चों. Oh my God, Manideep, Samsung S23 Ultra. How are you able to diagnose? I will identify that. Okay. Boys and girls, let us be very frank. Let us not bother about how much to cover, how much percentage, कितने classes होंगे, क्या होंगे. Let us not worry about. Let us सिर्फ एक ही बात आपको कहना चाह रहा हूँ. Attend the class, please. Attend the classes regularly and try to take maximum benefit out of it. ये तो बात आपको भी मानना पड़ेगा, मुझे भी मानना पड़ेगा कि we cannot cover up the whole course ना. Limited time है, fast track mode है. So I can only assure you that I will try my level best to justify to the maximum possible extent. आप भी उसे यूज करने की कोशिश कीजिएगा, राइट, यूटिलाइज करने की कोशिश कीजिएगा. ओके, वेरी गुड, राइट. तो बच्चों स्टार्ट करेंगे. आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड, जहां पर हम डिस्कस करेंगे सिलेबस का. डिटेल सिलेबस आपको बताऊंगा बच्चों. फर्स्ट सबसे पहले डिटेल सिलेबस डिस्कस कर लेंगे, राइट. जहां पर मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा, वो टॉपिक्स के पर भी हम फोकस करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम गेट एग्जाम पर्सपेक्टिव. वो टॉपिक्स पर आपको काफ़ी फोकस करना है, ठीक है. वो भी मैं हाईलाइट करूंगा सो दैट यू कैन हैव ए क्लियर आइडिया अबाउट इट. फिर उसके बाद हम राइट फ्रॉम ग्रास रूट लेवल वी विल स्टार्ट द कोर्स. चलिए बच्चों, तो देखिएगा, दिस इज द सिलेबस. टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे हम. Generally, I divide my syllabus of operating system from GATE perspective into 4 parts. First part में हम बोलेंगे introduction and background. Introduction and background में बच्चों यहाँ पर देखिएगा, we are starting like we should start from the definition of operating system, like what is operating system, functions and goals of operating system. देखिएगा बिल्कुल foundations, types of operating system. फिर एक particular type है जिसका नाम है multi-programmed operating system. So बच्चों from GATE exam perspective या general study of the operating system perspective, this is one of the topic. What is multi-programming? What is multi-programmed operating system? जो operating system हम Windows हो या Linux हो या Unix हो जो use करते हैं वो multi-programmed operating system है. फरहान खान, there is no need to take the notes. ये complete PDF आपको दे दी जाएगी, ठीक है. यू कैन बेसिकली टेक केयर ऑफ दिस नोट्स. और नोट्स की अगर बात कर, अगर मेरे रेगुलर कोर्स के डिटेल नोट्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कीजिएगा. वहां पर बच्चे कई नोट्स अपलोड किए हैं. यू कैन गेट फुल नोट्स ऑफ पेड बैचेस फ्रॉम देयर आल्सो एज सच. जो बच्चे अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं वो भी आप एक्सेस कर सकते हो बाय ज्वाइनिंग टेलीग्राम चैनल. तो चलिए, so multi-programmed operating system. फिर architectural requirements of multi-programmed operating system. फिर एक important aspect है जिसके बेसिस पर काफी questions गेट में पिछली बार आए हैं, वो है dual mode operation, जो हम यहां पर भी अच्छा डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है. ओके, डेफिनेटली आई विल टेल यू. सिस्टम कॉल्स, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है. काफी क्वेश्चंस आए जो मैं हाईलाइट किया हूं टॉपिक. ये टॉपिक के बेसिस पर पिछले गेट पेपर्स में काफी क्वेश्चंस आ चुके हैं एंड देयर इज लाइकलीहुड दैट यू कैन गेट मोर क्वेश्चंस इन फ्यूचर आल्सो. सिस्टम कॉल, फोक सिस्टम कॉल इज अ केस स्टडी. सो बच्चों फर्स्ट जो चैप्टर है, फर्स्ट जो टॉपिक है, इसमें आई वुड रिकमेंड दैट राइट यू कॉन्सेंट्रेट ऑन दीज टॉपिक्स. ये पीपीटी कहां पर मिलेगी? देखिएगा, ये पीपीटी आई विल शेयर इट विद द टीम. यू कैन गेट इन टच विद द टीम. They will provide copy of it hopefully. ठीक है. So यहाँ पर देखिएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेरा लिखने का यहाँ पे मतलब ये है, कुछ प्रॉब्लम्स तो मैं भी सॉल्व करूंगा लेक्चर्स में, ठीक है. लेकिन ये बेसिस पर, ये जो टॉपिक मैंने हाईलाइट किए हैं, इसके बेसिस पर ये आपकी जिम्मेदारी है कि PYQ आप निकालें और सॉल्व करें. ये मतलब है प्रॉब्लम सॉल्विंग. ओके, वेरी गुड, उत्तम मौर्य, फाइन. तो ये हो गया बच्चों फर्स्ट पॉइंट. अब सेकंड पॉइंट, इसके एक सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है सेकंड मॉड्यूल है जिसका नाम है प्रोसेस मैनेजमेंट. तो अंडर प्रोसेस मैनेजमेंट, तो ये टॉपिक का नाम बोलेंगे हम प्रोसेस मैनेजमेंट मॉड्यूल है. इसके अंदर कई चैप्टर्स है, नियरली 6 चैप्टर्स है. तो फर्स्ट चैप्टर का नाम है प्रोसेस कॉन्सेप्ट्स. फरहान खान, हैव सम पेशेंस, लुक एट दैट. प्रोसेस कॉन्सेप्ट्स, जैसा नाम बता रहा है कॉन्सेप्ट, वी आर गोइंग टू डील विद फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोसेस.
जहां पर देखना पड़ेगा व्हाट इज अ प्रोग्राम, व्हाट इज प्रोसेस एज एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम. बच्चों दिस इज हाईलाइटिंग पॉइंट. मेजर आई मीन most of the number of problems from this chapter were asked from this topic, process state transition diagram. काफी important topic है, काफी questions आ चुके हैं, and it is also vital important to understand later topics also, process state transition diagram. Then we have schedulers and dispatcher. Fundamental concepts है. These concepts are quite essential for understanding of later topics. तो ये हो गए आपके अंडर दिस प्रॉब्लम सॉल्विंग. यहाँ पर भी ये जो टॉपिक्स हमने डिस्कस किया, ये टॉपिक्स के बेसिस पर कौन से प्रॉब्लम्स, क्या प्रॉब्लम पीवाईक्यू है, उसे आप सॉल्व करना है. देखिएगा सेकंड चैप्टर है प्रोसेस मैनेजमेंट का, सेकंड चैप्टर है सीपीयू शेड्यूलिंग. काफी ये दिस चैप्टर, होल चैप्टर इटसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट. होल चैप्टर इटसेल्फ इज इंपॉर्टेंट. तो बच्चों रियली गेट के लिए आपने ये पूरे टॉपिक्स पढ़ना है, गेट रियल प्रिपरेशन ऑफ गेट के लिए. Yes, with this course you can definitely attend 1500 super series. Yashwant, definitely you can attend. So कहां से start करेंगे हम? Need for CPU scheduling and scheduling criteria, process times, scheduling algorithms. तो जितने भी scheduling algorithms हम यहां पर बताए हैं बच्चों, यहां पर जो लिखे हैं, these are all very very super important, super important. Lot of problem were asked in previous papers on CPU scheduling, और आगे भी आप solve कर सकते हो. राइट, आगे भी आप सॉल्व कर सकते हो सीपीयू शेड्यूलिंग टेक्निक्स. तो यहां पर क्रैश कोर्स में, फास्ट ट्रैक कोर्स में, वी विल ट्राई टू वर्क आउट सम ऑफ द गुड नंबर ऑफ शेड्यूलिंग टेक्निक्स. उसे हम वर्क करेंगे, प्रॉब्लम्स भी काफी सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो ये हो गया आपका चैप्टर ऑन सीपीयू शेड्यूलिंग. फिर उसके बाद देखिएगा somebody was asking threads. देखिएगा वी हैव एक्सक्लूसिव चैप्टर ऑन थ्रेड्स. ठीक है, लाइक थ्रेड कॉन्सेप्ट्स एंड बेनिफिट्स, टाइप्स ऑफ थ्रेड, थ्रेड इश्यूज, थ्रेड लाइब्रेरीज, फिर थ्रेड के बेसिस पर भी प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ थ्रेड्स. उसके बाद वी हैव द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर इन द होल कोर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. आई विल मार्क विथ 3 stars, जिसका नाम है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन. प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, या फिर बच्चे बाज ऑथर्स और टेक्स्ट बुक में बताया जाएगा प्रोसेस कोऑर्डिनेशन. बोथ आर सेम. ये जो चैप्टर है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन या प्रोसेस कोऑर्डिनेशन, ये दिस इज हाईली एनालिटिकल, इज हाईली एप्टीट्यूड ओरिएंटेड, थिंकिंग ओरिएंटेड, एनालिटिक बेस्ड. काफी एनालिसिस यहां पर करनी पड़ती है. इट इज जस्ट नॉट लाइक सीपीयू शेड्यूलिंग या मेमोरी मैनेजमेंट या फाइल सिस्टम वेयर यू हैव द फॉर्मूला, यू ट्राई टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर. इट इज नॉट लाइक दैट. यहां पर सिंक्रोनाइजेशन में आप पूछिए कोई भी गेट एस्पिरेंट जो सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं, दे विल से इज वन ऑफ द टफ टॉपिक. हालांकि टफ नहीं है. Initially it appears to the student that it is tough, right? So once you get a grip of synchronization, you would love to solve problems of synchronization. That is the beauty of this topic. That is the beauty of this topic. So boys and girls, I will try my level best to give you a strong foundation, at least I would say, for synchronization. जहां पर important topics पर हम discuss करेंगे, जैसे semaphore है and other aspects. तो देखिएगा बच्चों, What is IPC and synchronization? तो आपने अंडरस्टैंड करना है सबसे पहले IPC क्या है, फिर सिंक्रोनाइजेशन की नीड क्या है, व्हाट इज द नीड फॉर सिंक्रोनाइजेशन, टाइप्स ऑफ सिंक्रोनाइजेशन, फिर क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम का मतलब क्या है, रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम. देखिएगा इस डिटेल्स में बच्चों, आपको गारंटी कर रहा हूं मैं, यहां पर हम क्रैश कोर्स में शायद हम इतना पूरा डिटेल में नहीं जा पाएंगे, बिकॉज ये जो सिलेबस है एग्जैक्टली वही फॉर्मेट में जो हम रेगुलर कोर्स में डिस्कस करते हैं. तो अगर आप जब प्रिपेयर कर रहे हो ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज हाईली रिकमेंडेड, इट इज हाईली डिजायरेबल दैट यू प्रिपेयर इन दिस लाइंस, इन दिस फॉर्मेट, इन दिस पैराडाइम, then it will be highly beneficial for you. That is what I wanted to tell you. So requirements of critical section problem. अब यहां पर असल टॉपिक है सिंक्रोनाइजेशन की, सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म्स, सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म्स, जहां पर पूरे सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म लिस्ट किए गए, लाइक लॉक वेरिएबल, स्ट्रिक्ट अल्टरनेशन, पीटरसन सॉल्यूशन, सिंक्रोनाइजेशन हार्डवेयर, सेमाफोर्स. स्टार टॉपिक. Among all the synchronization mechanisms, semaphore is the most important one. Semaphore is most crucial and most important one. Okay? So that is about semaphore. So in our crash course also, fast track course also, we will have an emphasis on semaphores. Okay? Then classical, a related issue of synchronization is called classical IPC problems. वो problem जो classical IPC है, classical मतलब you know it, like classical music,
standard music. उसी तरह those standard problems that deals with synchronization, there are 3 of them which are important. ये 3 प्रॉब्लम्स के बेसिस पर काफी क्वेश्चंस प्रीवियस पेयर्स में आए हैं, सो देयरफॉर दे आर ऑफ सिग्निफिकेंस. हम यहाँ पर अपने क्रैश कोर्स में इन तीनों के बारे में एटलीस्ट वी विल हैव एन इंट्रोडक्टरी डिस्कशन. वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रोड्यूसर कंज्यूमर, व्हाट इज रीडर राइटर, व्हाट इज डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम. ठीक है. उसी तरह देयर आर अदर मैकेनिज्म्स लाइक मॉनिटर्स एंड a related issue of synchronization that is called concurrency. Concurrency is also very important. Some good number of problems were asked in earlier papers. Concurrency. ठीक है. Like what is concurrency, types of concurrency, what are concurrency requirements, what are conditions for achieving concurrency, and what are concurrency mechanisms. ये सारे के सारे टॉपिक आएंगे concurrency में. फिर मैंने कहा यहाँ पर लास्ट में प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब वो I mean all PYQs based on these topics you have to work out. That is the meaning of problem solving. फिर उसके बाद देखिएगा बच्चों, लास्ट एस्पेक्ट ऑफ प्रोसेस मैनेजमेंट इज डेडलॉक्स का और एक मतलब है लॉकअप. So boys and girls, this topic is also relevantly काफी important है from examination perspective. Many questions were asked, many questions. Like for example, what is concept of deadlock, system model, deadlock characterization, and then most important thing are strategies. The important strategies in deadlock handling include avoidance, prevention, detection and recovery. तो हमारा एक सेशन particularly on deadlocks भी होगा. So we'll take up one dedicated session on deadlock handling also. चलिए आगे बढ़ेंगे. अब थर्ड मॉड्यूल है बच्चों. फर्स्ट मॉड्यूल हमने क्या देखा, इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड. सेकंड मॉड्यूल प्रोसेस मैनेजमेंट. प्रोसेस मैनेजमेंट के में हमने चैप्टर देखा प्रोसेस कॉन्सेप्ट, सीपीयू शेड्यूलिंग, थ्रेड्स, राइट, एंड देन प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन एंड डेडलॉक हैंडलिंग. ये चैप्टर्स है अंडर प्रोसेस मैनेजमेंट. अब इसके बाद थर्ड मॉड्यूल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मेमोरी मैनेजमेंट. तो जहां पर हम स्टार्ट करते हैं डिस्कशन एब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ मेमोरी, मतलब हाउ डज ए प्रोग्रामर और द ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलपर विजुअलाइज मेमोरी एज, व्हाट इज दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ मेमोरी. फिर उसके बाद सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मेमोरी लाइक लोडिंग एंड लिंकिंग, एड्रेस बाइंडिंग. फिर एक्चुअल टॉपिक स्टार्ट मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक. सो फ्रॉम गेट एग्जाम पर्सपेक्टिव and general understanding perspective, memory management techniques like swapping, partitioning. So partitioning is another area from where some good number of questions were asked in earlier papers, including recent times. Like we have fixed partition, variable partitions. Crash course में हम ये भी देखेंगे. Then we have the most important thing, non-contiguous allocation. Second type of memory management technique, that is called non-contiguous memory management technique. So within non-contiguous, as somebody has already mentioned in the chat box, paging बहुत ज़्यादा important है बच्चों. Paging technique. मैं crash course में paging पर emphasize करने की ज़रूर कोशिश करूँगा. So paging technique, simple paging with TLV, hash paging, multi-level paging, inverted paging, shared pages, segmented paging, so many techniques. All these are very, very important. तो जो भी topics पर मैं star mark कर रहा हूँ, double star, single star, those are the topics which you have to concentrate. अगर आप बात करोगे within this different types of paging, मैं emphasize करूंगा this particular technique, or somebody was already mentioning multi-level paging. Superstar important, triple star, multi-level paging. जिस तरह synchronization is one topic where students have difficulty, उसी तरह multi-level paging भी एक concept है जहां पर students generally feel difficulty. We'll try to touch upon what is multi-level paging, why do we need multi-level paging, right? And how multi-level paging will solve our problems that we encounter in simple paging or single level paging. ये सारा discussion हम multi-level paging में करेंगे. ठीक है. फिर उसके बाद देखिएगा, हाँ, यहाँ पर एक टॉपिक जो मिस हो गई है मुझसे लिखने में, वो यहाँ पर मैं हैंड रिटन लिख दूंगा. लास्ट पार्ट जो होगा मेमोरी मैनेजमेंट में, वो है चैप्टर नंबर 12, वर्चुअल मेमोरी. This is missed out in the slide. Virtual memory. Generally, we write in short VM. Virtual memory. A very important topic, boys and girls. Namaste. Now, within this, we should see what is VM concept, virtual memory concept, and more importantly, virtual memory implementation.
ठीक है। फिर उसके बाद परफॉर्मेंस ऑफ वर्चुअल मेमोरी, ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। सो फ्रॉम गेट एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव I would say virtual memory implementation is very important. ठीक है। So that is about virtual memory and its implementation. So this is the end of module 3. Module 1 introduction, module 2 process management, module 3 memory management. Yes, पेज रिप्लेसमेंट, पेज फॉल्ट का कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा, वो सभी यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा. We'll have a session on virtual memory also, don't worry. ठीक है. ओके, नेक्स्ट लास्ट मॉड्यूल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम का जो लास्ट मॉड्यूल है वो ये है. यस, हाँ कार्तिक, प्री रिक्विजिट की भी बात करूंगा और टेक्स्ट बुक की भी बात करूंगा. जस्ट हैव सम पेशेंस. या थ्रैशिंग भी वर्चुअल मेमोरी में आती है वैभव, करेक्ट. देखिएगा फाइल सिस्टम. इन दिस फाइल सिस्टम एंड डिवाइस मैनेजमेंट we are going to discuss physical structure of disk, logical structure of disk, file system interface, directory, files, attributes, operation, types of files. फिर इसके बाद फाइल सिस्टम इंप्लीमेंटेशन. फाइल सिस्टम इंप्लीमेंटेशन एक ऐसा टॉपिक है बच्चों जो अगेन लाइक सिंक्रोनाइजेशन, उसी तरह बच्चे फाइल सिस्टम इंप्लीमेंटेशन पर भी काफी नर्वस होते हैं, काफी कंफ्यूज हो जाते हैं फाइल सिस्टम इंप्लीमेंटेशन पे. Lot of questions were asked in earlier occasions based on allocation methods and free space management. तो हम emphasize करेंगे इस crash course में on allocation methods. I will talk about it. Don't worry. ठीक है. Relevant problem solving भी करूंगा on file allocation methods. Security is not included, Sagar Gupta. Security is not there in the GATE syllabus, but actually it is one of the important topic of operating system design. But it is not in the GATE syllabus. That's why we are not going to discuss it. Yashasvi, I already told you, I will share this slide with the team, batch team or backend team. Now you have to coordinate with them and try to get this slide. See, what I'm saying, Farhan Khan, this is the complete syllabus which is needed for operating system preparation from GATE exam perspective. जब आप operating system GATE exam perspective से पढ़ोगे तो ये सारे टॉपिक्स डिटेल में, ये टॉपिक्स आपको पढ़ना है. अगर आप गेट का सिलेबस देखोगे वहां पर इतने डिटेल में टॉपिक्स नहीं दिए जाएंगे. ठीक है, वहां पे सिर्फ इतना बता दिया जाएगा वर्चुअल मेमोरी. लेकिन वर्चुअल मेमोरी में क्या पढ़ना है हमने यहां पर देखा. वो लिखेंगे मेमोरी मैनेजमेंट. तो भैया मेमोरी मैनेजमेंट में क्या पढ़ना है वो मैंने यहां पर एलॉबरेटली डिस्कस किया है. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. ठीक है ना. So when you are in detail preparing for GATE exam for operating system course, so my dear students, these are the topics in detail you study, then I can guarantee you that definitely you can fare very well in the exam. That is what I say. Dhruvs, I have already told you that it is not going to be sufficient or definitely sufficient for the whole perspective of operating system, but you can give a try. If you have already studied operating system at the college level or at some level, then definitely this will be useful. But if you have not studied at all, then maybe I cannot say anything except that you can try to understand. You can try to understand. ठीक है, देखिएगा सिंपल बच्चों, prerequisites ये है for following this course. For following this course, the prerequisites are number 1. Basics of CO, basic fundamentals. I'm not expecting you to be well versed with CO. Basics of CO, बहुत basic knowledge of CO. What is computer, what is architecture, and then what are the components of the computer architecture and so on. Then you need to have some basics of programming. That's it. Programming and data structures, I would say. Data structures का मतलब यह है कि what is an array, what is a queue, what is a stack, what is a linked list. बस इतना ही, nothing more than that. So these are the important prerequisites for understanding this course. उसके बाद रही बात resources की, जैसा मैंने अपने introductory lecture में भी आपको बताया था कि we are going to discuss about the resources that you need to refer for following the course of operating system. Resources की अगर बात करोगे, then I would say for textbooks you can say Operating Systems by Galvin. This is one of the prominent textbooks of operating system. Galvin की textbook आप देख सकते हो. ठीक है. Second, you can refer some YouTube sessions.
YouTube videos of prominent university professors, even PW के जो recorded sessions है, that also should be helping you, plus maybe NPTEL videos of IIT professors that you can make a reference to. But do not try to watch unauthentic, right, undermined resources, undermined videos which are not authentic, which are not from standard sources. Don't watch and waste your time and get your, right, concepts totally unclear. तो मेरी आपसे गुजारिश है, मेरी आपसे अपील है, प्लीज फॉलो दीज रिसोर्सेज, डोंट गो बियॉन्ड दिस. ऑपरेटिंग सिस्टम में गैल्विन टेक्स्ट बुक देखिएगा, यूट्यूब वीडियोस ऑफ स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स, यूएस यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स, जैसा कि कोर्सेरा कोर्स है, MIT कोर्सवेयर है, वहाँ के अगर आप देख रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. उसी तरह NPTEL के वीडियोस है, वहाँ पर भी आप वॉच कर सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम के कोर्स. They should be from IIT professors. Then you can watch, there is no issue. There is no problem. So these you can follow. Yashasvi, I will try to contact the team. I also don't know how to get. I will try them to somehow share these PPTs with you, PDFs. Okay. ठीक है. So that is the prerequisite and the resources. एंड विथ रिगार्ड टू प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, देखिएगा लास्ट 2 मंथ्स की स्ट्रैटेजी में ये होना चाहिए कि आपका कांस्टेंट रिवीजन ज़्यादा होना चाहिए एंड PYQs काफ़ी नंबर ऑफ आइटरेशंस में सॉल्व करना है. कि somebody has just now asked me, सर क्या मैं प्रीवियस 5 years के PYQ सॉल्व कर लिए तो काफ़ी है? नहीं भाई, मिनिमम आई वुड से यू सॉल्व PYQs ऑफ लास्ट 20 to 25 years. लास्ट 20 to 25 years PYQs आपने मिनिमम 3 times सॉल्व करना है. 3 times सॉल्व करना है. ठीक है, 3 times यू हैव टू सॉल्व. और रही बात लास्ट 2 months में, यू कॉन्सेंट्रेट फुल्ली ऑन रिविजन, यू कॉन्सेंट्रेट फुल्ली ऑन PYQs, एंड ऑल्सो my again humble request to all of you is those who are sincerely and seriously preparing for GATE, please don't leave any subject. तो एटलीस्ट आई वुड रिकमेंड, ये जो PW का इनिशिएटिव है, PW का एक स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव है ऑफ प्रोवाइडिंग दिस फास्ट ट्रैक कोर्स या क्रैश कोर्स, राइट, इट इज अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट फॉर रिवीजन. इट विल बी डेफिनेटली बेनिफिशियल फॉर दो स्टूडेंट्स जो पूरा का पूरा सब्जेक्ट प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ मे बी लैक ऑफ टाइम और व्हाटएवर, और ये प्लान करके अगर चल रहे हैं कि सारा सब्जेक्ट छोड़ देंगे, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एटलीस्ट बच्चों अगर आप इतना पढ़ लेंगे जो हम पढ़ा रहे हैं फास्ट ट्रैक कोर्स में, then definitely it will serve your purpose to certain extent, if not full extent. ये पक्की गारंटी है मेरी. तो मान लीजिए कोई स्टूडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम गेट के लिए डिसाइड कर लिया कि मैं छोड़ रहा हूं, अगर वो छोड़ने के बजाय सिर्फ ये जो लेक्चर्स है, जो लिमिटेड नंबर ऑफ लेक्चर्स रहेंगे, वॉच कर लेंगे आप, यू विल गेट सम ग्रिप. वो ग्रिप के बेसिस पे ऐसा हो सकता है, देयर इज अ हेवी प्रोबेबिलिटी, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट you can solve some questions of operating system and score some good number of marks, good marks. यही मैं आपको कहना चाह रहा हूं. पूरा अगर आप करोगे तो बहुत अच्छा है, नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट इतना कर लीजिए, रादर देन लीविंग द होल सब्जेक्ट. शायद व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू माइट हैव अंडरस्टूड, राइट, यू माइट हैव गॉट माय पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. सो एटलीस्ट दैट विल सर्व योर पर्पस, दैट्स व्हाट आई वुड से. क्योंकि कई बच्चे मुझे बोले हैं, दे हैव ट्राइड टू से, सर आई एम लीविंग द फॉलोइंग कोर्सेस, ऑपरेटिंग सिस्टम या एल्गोरिथम या CO नेटवर्क्स, जो भी हो. For my appeal to them is don't leave, take up this opportunity. ये एक best opportunity है for such students to watch the crash course, get some knowledge rather than leaving the subject. चलिए बच्चों, काफी हम डिस्कस कर लिए हैं, तो shall we start बच्चों? Shall we start the subject? Shall we go ahead with starting of the subject, or any questions or any doubts left over? बोलिएगा. Is there anything that you would like to ask before I start, or shall we go ahead? चलिए स्टार्ट करेंगे. तो बच्चों हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच. ठीक है, जस्ट अ सेकेंड. चलिए हाँ बोलिए फरहान खान, व्हाट इज द लास्ट थिंग दैट यू वांट टू आस्क? बोलिए फरहान, व्हाट डू यू वांट टू आस्क? ओके,
मार्क्स स्कोर सकते हैं सर इस कोर्स से। रक्षित जस्ट नाउ आई टोल्ड द सेम पॉइंट बच्चे, आपको वही बताया मैं बेटे कि यू कैन डेफिनेटली स्कोर, इफ नॉट फुल मार्क्स एटलीस्ट रीजनेबली गुड नंबर ऑफ मार्क्स। ठीक है गोपाल कुमार, विल टॉक अबाउट सम मोटिवेशन एट लेटर पॉइंट ऑफ टाइम। हाँ सौरभ कल्लापुर, द वेटेज ऑफ दिस कोर्स इज अराउंड 8 to 10 मार्क्स। आप मान के चलिए इन द मेन एग्जाम यू कैन हैव वेटेज ऑफ 8 to 10 मार्क्स। 8 to 10 मार्क्स का वेटेज रहेगा। थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे, रीजनिंग क्वेश्चंस आएंगे, और ये वो सब्जेक्ट है जहां से आपको ज्यादा एमएसक्यू भी आएंगे। See Farhan Khan, that happens with everyone. You are not the only person who are going to have this, right? Everybody will have those problems. Don't worry about those problems. Just continue your preparation, continue your hard work, right? Never allow negativity to prop up in your mind. Just keep on putting the efforts. Okay, Ahmad, no problem. You attend this course also because जो last year का crash course था उससे थोड़ा different भी रहेगा यहाँ पर, different भी रहेगा, no problem. चलिए स्टार्ट करेंगे बच्चों। So starting from the score or the main part or basics of operating system, starting with the definition of what. चलिए very quickly बताइए बच्चों in the chat box, what is a formal definition of operating system? Formal definition क्या है? Yeah, Funto, hopefully we'll have algorithm course also, don't worry. We'll have algorithm course also in fast track mode. Come on, boys and girls, write down the formal standard definition of operating system. बोलिएगा. Navjot, we'll not worry about how many hours. We'll try our level best to complete in minimum possible time, maximum possible content with good quality. कोशिश कीजिएगा कार्तिक कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, अटेंड कीजिए बिकॉज दिस इज नॉट ए लेंथी कोर्स, यू कैन गिव अ ट्राई इवन इफ यू हैव नॉट स्टडीड अर्लियर। चलिए बच्चों फास्ट ट्रैक में लिखेंगे व्हाट आर द डेफिनेशंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सो लेट मी रीड सम डेफिनेशंस। govern interface between hardware and user, very good, very correct. Gopal Kumar is also saying operating system works like government resource manager. Excellent बच्चों, काफी definitions यहाँ पे मिल गए हैं मुझे, फिर भी यहाँ पर हम लिख लेंगे। The most prominent definition of operating system is it acts as an interface between user and hardware. User and hardware. Other definition is operating system acts like a resource manager. Resource manager. Next, operating system is a control program. Control program. Next, operating system is a set of utilities. Set of utilities. To simplify, application development. Application development. चलिए लास्ट हम बोलेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम टिपिकली एक्ट्स मतलब फंक्शंस, एक्ट मतलब फंक्शंस लाइक ए गवर्नमेंट। ये है स्टैंडर्ड डेफिनेशंस ऑफ व्हाट ऑपरेटिंग सिस्टम इज। Boys and girls, now in between you don't try to write some doubts or related to point because my attention will get diverted. थोड़ा स्टडी करेंगे, फिर जब मैं क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए आपको बोलूंगा जब आप पूछिएगा डाउट, लाइक somebody is asking I'm in final year and pass out next year, so lack of time couldn't give full effort to all subjects. So all these you ask later point, PYQs and all that, right? So let's focus on this. Let us talk about those doubts at the end of the session. At the end of the session. Interface between user and hardware. मतलब अगर आप मान लो this is user like you and me, user or maybe programmer like you and me, and here I have the hardware, here I have the hardware, computer hardware, and we are saying that operating system act as an interface between them. The meaning of the first definition I can explain it like this.
इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। तो बच्चों हमें अंडरस्टैंड करने से पहले कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरफेस, इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस हार्डवेयर, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द हार्डवेयर, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द हार्डवेयर फॉर विच द ऑपरेटिंग सिस्टम हैज टू एक्ट एज एन इंटरफेस। तो बच्चों यहां पर हम बोलेंगे देयर आर थ्री मेजर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, वन इज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, द अदर इज मेमोरी, and the third one is input output interfaces. There are three important components of the hardware. There are three important modules within the hardware. One is CPU, the other is memory, and the third is input output interfaces, input output devices. Okay? So this hardware, computer hardware components is proposed by a person called von Neumann, proposed by a person called von Neumann, and hence this architecture is called von Neumann architecture. आपने इन द सब्जेक्ट ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन या आर्किटेक्चर पढ़ा होगा, von Neumann architecture. So as per von Neumann architecture, you have a processor, you have a memory and input output devices. Memory will store the programs that you wish to execute. Central processing unit will have two parts, control unit and arithmetic logic unit. Central processing unit, as the name implies, is meant for processing the data, right? Central processing CPU, it executes the instructions, generate the timing signals, and all arithmetic logical operations are performed in central processing unit. It is heart of the computer, right? And memory, central to operation within the computer is memory, meant for storing programs. जो भी programs आप execute करना चाहो, those programs has to be first stored in memory. Input output devices like your keyboard, mouse, monitor, and all secondary storage devices like hard disk, pen drive, DVD, they all are considered under IO devices. तो बच्चों आपको बात इंपॉर्टेंट बात बताना ये है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रिंसिपल्स और डिजाइन एस्पेक्ट्स हम जो कोर्स में पढ़ने वाले हैं या जो आप पढ़े हैं, दैट इज फॉर ए von Neumann आर्किटेक्चर बेस्ड कंप्यूटर। जो नॉर्मल डेस्कटॉप लैपटॉप आप यूज करते हो इन द ऑफिस एट होम, इन द ऑफिस और एट होम, दैट इज बेसिकली ए von Neumann आर्किटेक्चर बेस्ड कंप्यूटर। डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, विच वी यूज एट होम एंड ऑफिसेस, दैट इज बेस्ड ऑन von Neumann आर्किटेक्चर। तो यहां पर आप बोलोगे सर कैन वी हैव अदर आर्किटेक्चर्स? हाँ बिल्कुल, वी हैव अदर आर्किटेक्चर्स। वी हैव हार्वर्ड आर्किटेक्चर, वी हैव रियल टाइम आर्किटेक्चर, वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर, वी हैव मोबाइल आर्किटेक्चर, सो ऑन। तो ये बेसिस पर मुझे आपको ये बात कहना है कि एज द आर्किटेक्चर, बॉयज एंड गर्ल्स प्लीज अंडरस्टैंड एंड कीप दिस पॉइंट इन माइंड, एज द कंप्यूटर आर्किटेक्चर चेंजेस, ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन, फंक्शनैलिटी चेंजेस। ऑपरेटिंग सिस्टम का डिजाइन इनवेरिएबली डिपेंड करेगा आर्किटेक्चर पर। जैसे ही आर्किटेक्चर चेंज होगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी चेंज होगा। मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम आप von Neumann आर्किटेक्चर के लिए इंप्लीमेंट करोगे, बनाओगे, दैट मे नॉट वर्क ऑन अदर आर्किटेक्चर। ये बात कहना चाह रहा हूं। अगेन आई एम एम्फसाइजिंग, जो ऑपरेटिंग सिस्टम आप von Neumann आर्किटेक्चर के लिए इंप्लीमेंट करोगे, डेवलप करोगे, दैट मे नॉट वर्क विद अदर आर्किटेक्चर्स, दैट मे नॉट वर्क विद अदर आर्किटेक्चर्स। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यू हैव ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल्स, एंड्रॉइड, iOS, BlackBerry, right, etc. Those operating systems, if you try to install on your desktop or laptop, it won't work. उसी तरह जो ऑपरेटिंग सिस्टम आप डेस्कटॉप और लैपटॉप पे यूज करते हो, यूनिक्स, लिनक्स और विंडोज, यू ट्राई टू लोड इट ऑन योर मोबाइल फोन्स, इट वोंट वर्क। इट इज आर्किटेक्चरल स्पेसिफिक, इट इज आर्किटेक्चरल स्पेसिफिक। यही पार्ट हम कर रहे हैं। तो बच्चों जो ऑपरेटिंग सिस्टम के डिजाइन प्रिंसिपल्स हमने सब्जेक्ट में लिखे हैं, दैट इज मेंट फॉर ए von Neumann आर्किटेक्चर। von Neumann आर्किटेक्चर का ये कंपोनेंट्स है। इट फॉलो ए पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जीक्यूशन दैट इज कॉल्ड stored program concept. You have to remember this, stored program concept, stored program concept. ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। stored program concept का मतलब ये है कि जो भी प्रोग्राम आप एग्जीक्यूट करना चाहो, that program has to be stored in memory first. आपका अगर प्रोग्राम डिस्क पर हो, if your program is stored on disk, you cannot execute from the program directly from disk. You have to load it in main memory. So उसी तरह हर कंप्यूटर आर्किटेक्चर का अपना एक प्रोग्रामिंग पैराडाइम होगा, अपना एक प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का पैटर्न होगा। तो von Neumann architecture follows stored program concept. So as per stored program concept, you have to store the program in the main memory and then only the processor can execute the program. और execute कैसा होगा? Sequential होगा, parallel execution नहीं होगा, sequential flow of control बोलेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों विथ रिगार्ड टू हार्डवेयर।
तो why do you require this hardware? Why do you require this operating system for this hardware? Reason is very simple. The hardware understands the language of binary 0, 1. And we as users or programmers understand the high level language. A to Z, high level. ऐसा लिखने का मतलब है high level. So if we want to operate on the hardware, I should learn the language of binary, which is very difficult and tedious. Managing the hardware is very difficult and tedious. तो इसलिए हम क्या करेंगे? We will give that responsibility to this module called operating system. हम बोलेंगे भैया you take care of managing the hardware and provide a platform to me, create a platform to me so that I can concentrate on my application development in my language rather than worrying about the hardware. So that is the meaning of operating system. So operating system is a software. It is called control software. It is called system software, right? Don't think operating system is hardware, system software. It is meant for taking the charge, taking the control of the hardware, create a platform, provide a platform so that people like you and me can concentrate on our application development in high level mode rather than worrying about managing the hardware. ये है operating system. ये है interface. Then secondly, operating system is considered to be a resource manager. Manager of resources, hardware and software resources. It manages all the hardware components. It manages other software resources जैसे कि IPC mechanisms है, semaphore mechanisms है, synchronization mechanisms है, etc. Resource manager. It is a program. It is rather a set of programs, बच्चों, not one program. It is a set of programs. Meant for what? Meant for controlling the operations of the computer. तो वो sense में हम बोलेंगे operating system is like a control program. It is like a control program. Next, it is nothing but a set of utilities. Process manager, memory manager, file manager, device manager. Operating system में कई utilities है. So all these utilities for what purpose? To simplify our application development. Process manager will provide some services. Memory management will provide some services, and we will use those services. उस तरह हम बोलेंगे it is a set of utilities for an intention of what? For the purpose or intention so that the user application development process can be simplified. Lastly, it typically functions like a government. ये एक important correlation है to make the students understand कि भाई exactly what is operating system. बच्चों, operating system को अगर समझना है, you understand the way government functions, government works, government architecture. The government architecture क्या है? Government is not one person. Similarly, operating system is not one single program. Like government has several ministries, cabinets. उसी तरह operating system also have set of cabinets, set of ministries. There is no one single program which is operating system. I have process manager is one ministry, memory manager is one ministry, file manager, device manager, security, protection, so on. Likewise, in the government, you cannot say one person is government. You cannot say prime minister is government. You cannot say home minister is government. You cannot say external minister is government. But they are part of government. उसी तरह operating system is also not one program. It is a collection of programs. So that way we say operating system typically functions like a government. Just like government is of the people, by the people and for the people. उसी तरह operating system is also developed by us, meant for us. It is for the people. It is for the user application, users and programmers, right? Just like government provides services, operating system also provides services, and we as users and programmers use or utilize those services. ये है perception of what is operating system, right? What is operating system? उसका है perception है. तो बल्कि यहाँ पर एक बात कहनी है कि even though we have so many definitions of operating system, but still the developers of operating system, या फिर आप बोलो researchers of operating system, implementers of operating system, designers of operating system, they are of the view that none of these definitions are complete. Even though so many definitions are there, but none of these definitions are complete. Why? Because different people, very important point, different people working in different domains, utilizing operating system, have different views of operating system. देखिएगा, operating system is used by so many categories of people, और हर category will have its own perception. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, छोटा सा 3 या 4 साल का बच्चा है, दे आर ऑल्सो यूजर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. मुझे भी पता है विंडोज क्या है, यूनिक्स क्या है, लिनक्स क्या है. तो अगर आप एक छोटे बच्चे को पूछोगे, बेटा प्लीज टेल व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर यू, ही वुड से दैट
Operating system is meant for playing games, watching my favorite cartoon. Is it not? You won't expect a response from the child saying that, no sir, I use operating system for doing hardcore Python programming or hardcore data science programming or machine learning programming, something like that. You won't expect. तो चाइल्ड का अपना एक परसेप्शन है. उसी तरह एक डेटा एंट्री ऑपरेटर है, आप उसे पूछोगे सर मैडम व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम मेंट फॉर यू, ही वुड से दैट using operating system I manage my files, I make PPTs, I manage my database etc. उसी तरह एक फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट को जब अगर आप पूछोगे व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, ही वुड रिप्लाई एंड से दैट आई यूज ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर ब्राउजिंग नेट, राइट, एंड देन डूइंग सम बेसिक प्रोग्रामिंग इन सी एंड सो ऑन. लेकिन एक प्रोफेशनल डेवलपर को अगर आप पूछोगे या फिर जो स्टूडेंट जिन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीट किया हो, if you ask them what is operating system meant for you, then they would say operating system is meant for, or for me operating system is doing system programming, doing shell programming, and a point has come where I can develop my own operating system. So as the frequency spectrum, the spectrum I call, increases, that perception, that visualization also increases. So different people will have different perceptions of operating system. That is why they say that it is better to understand what is operating system from its functional perspective. उसकी जो functionality है वो जब आप understand करोगे तभी आपको पता लगेगा what exactly is the capability of operating system. So that's why we study the functionality. तो फंक्शनैलिटी स्टडी करने से पहले हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है गोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट, या गेमिंग वीडियोस एंड ऑल दैट इज करेक्ट तुषार. So before I come to the goals of operating system, here I have some slides which we will quickly go through. Look at this. A program that acts as an intermediary between user and hardware. The discussion जो हमने की यहाँ पे summarized discussion है, देखिएगा. Goals अभी हम आ जाएंगे यहाँ पर. एक abstract view है, देखिएगा, of computer component जो अभी हम डिस्कस किए. देखिएगा, at the lowest level I have for example CPU, memory, IO. This is not application programs. ये गलत है, यहाँ पर है application programs. This is mistake. This is hardware. So at the lowest level we have the hardware. Then we have the operating system. This operating system is also, यहाँ पर बोलेंगे operating system core या kernel. मेन पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कोर या कर्नल. जैसा अगर आप गवर्नमेंट का बोलो तो पार्लियामेंट बोलोगे आप, दिस इज लाइक पार्लियामेंट, कोर और कर्नल. एंड देन ओवर एंड अबव यू हैव अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम लाइक कंपाइलर्स, वेब ब्राउजर्स, डेवलपमेंट किट्स एक्सेट्रा, एंड देन यूजर्स विल सिट हियर. सो दिस इज अ टिपिकल एब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ ए कंप्यूटर अलोंग विद ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हार्डवेयर. चलिए, वेरियस डेफिनेशन देखिएगा बच्चों यहाँ पर. नो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन, अभी वही बात मैंने कहा था. Why there is no universally accepted definition? Just now I told the point. Because different people working in different domains visualize operating system differently. So everything is a vendor ships when you order an operating system is a good approximation. Okay, but where is definition varies widely. So it is a program that runs all times on the computer is the kernel, nucleus. Kernel also called nucleus, core. Nucleus or core. जो मेन पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोग्राम वो है कर्नल और न्यूक्लियस विच रिसाइड्स एंड एग्जीक्यूट. एवरीथिंग एल्स इज सिस्टम प्रोग्राम्स है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के कोर में रहेंगे एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स दैट आर एसोसिएटेड विद द ऑपरेटिंग सिस्टम. चलिए, हाँ, बिफोर आई कम टू गोल्स लेट अस वेरी क्विकली गो थ्रू द कंप्यूटर आर्किटेक्चर. ये एक डायग्राम आपको समझेगा, ये ब्लॉक डायग्राम ऑफ योर कंप्यूटर है. यहाँ प्रोसेसर है, ये सिस्टम बस है, मेमोरी इज देयर. These are all IO devices. क्या है बच्चों, देखिए IO devices, आपकी डिस्क रहेगी IO device में, माउस है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है, मॉनिटर है. These are all connected through what is called a system bus. और ये कंट्रोलर कार्ड्स है. This is all your hardware part. ये सभी को पता है. जो कंप्यूटर के इंटरनल कंपोनेंट्स है वो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं. So processor is the main core part that execute the instruction. All the programs, instructions and data units are stored in memory, and these are all input output devices. So this is a standard architecture of a von Neumann architecture. ये है आपका von Neumann architecture जिसकी fundamental philosophy है stored program concept. Stored program concept जिसका मतलब ये है कि the program that you wish to execute must be stored in memory for execution. ये मतलब है.
तो ये दिस इज ठीक है, ये डायग्राम पे मेमोरी के पार्ट पे हम बाद में आएंगे। अच्छा ठीक है, ये डिस्कस कर लेंगे यहाँ पर, नो प्रॉब्लम। आई विल डिस्कस इट लाइक दिस। व्हेन वी से मेमोरी, बच्चों आंसर कीजिएगा प्लीज, दोज हु नो इट प्लीज टेल। व्हेन वी से मेमोरी इन द कंप्यूटर सिस्टम्स ऑफ वॉन ह्यूमन आर्किटेक्चर, memory is of two types. बोलिएगा बच्चों। When we talk of memory in the von Neumann architecture, we say memory is of two types. बोलिएगा, what are the two types of memory? What are the two types of memory? Come on, let me see the responses. Memory is of two types. What are the two types of? Very good, Shubham. So memory is of two types. One is called primary and the other is secondary. Examples of primary memory includes RAM, ROM, cache, and even registers of CPU comes under the class of primary memory. Examples of secondary memory includes disk systems, right? Tapes, cartridges. These are all examples of secondary memory. Differences between primary and secondary memory. बोलिएगा बच्चों, differences between primary memory and secondary memory. Primary memory is volatile. This is non-volatile. Non-volatile. Primary memory is faster to access. Secondary memory is slower to access. Access का मतलब reading and writing a word. हाँ, पेन ड्राइव भी यहीं पे आएगी secondary में. Primary memory is costly. This is cheap. And primary memory is smaller in size. Secondary memory is larger in size. Generally, this is in the order of terabytes. This is order in the order of gigabytes. Faster means it is in the order of nanoseconds. Slower means it is in the order of milliseconds. ये है इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो ये मेमोरी हायरार्की के बेसिस पर ये डायग्राम आप समझ सकते हो। देखिएगा, सबसे लोएस्ट लेवल पे जो सबसे ज्यादा साइज रहेगी वो है मैग्नेटिक टेप्स, उनके ऊपर आपके पास ऑप्टिकल डिस्क, हार्ड डिस्क ड्राइव्स, दीज आर ऑल नॉन वोलेटाइल मेमोरी, एंड देन दे हैव वोलेटाइल मेमोरी, मेन मेमोरी, कैशे मेमोरी, रजिस्टर, दिस इज प्राइमरी स्टोरेज। ये है डिफरेंस बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ मेमोरी। ठीक है, सो दैट इज अबाउट मेन मेमोरी सिस्टम। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बच्चों, जैसा हम बात किए थे, बिफोर वी टॉक अबाउट द फंक्शनैलिटी, लेट अस सी व्हाट शुड बी द गोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। बिफोर वी कम टू द टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, लेट अस क्विकली कॉन्सेंट्रेट ऑन गोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए मुझे लिख के बताइएगा चैट बॉक्स में, व्हाट शुड बी द इंपॉर्टेंट गोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। देखेंगे कौन आंसर करेगा। कम ऑन बच्चों, टेल मी what should be the important goals of operating system. Come on boys and girls, please respond. हाँ रवि कुमार, volatile का मतलब ये है कि as long as power supply is there, the contents are accessible. जैसे ही power supply आप निकाल दोगे, the contents are gone, erased. That is called volatility. Volatility. रवि कुमार, I told just now, volatile का मतलब ये है, as long as, देखिए आप रैम जो है, as long as कंप्यूटर इज पावर ऑन, स्विच ऑन जब तक रहेगा तो रैम में कंटेंट रहेंगे, और जैसे ही पावर ऑफ हो जाएगा, जैसे ही पावर ऑफ हो जाएगा, राइट, as just wait for a second. So as long as power supply is there, we can access the contents. The moment power supply goes off, the whole contents are gone. The whole contents are gone. That is called volatility. ठीक है, that is called this. So चलो बच्चों, काफी बच्चों ने कहा goals. Let us try to write down the goals here. Important goals of operating system. The important goals of operating system includes convenience, मतलब यूजर फ्रेंडली,
Next important goal is efficiency. Efficiency. Efficiency का मतलब है effective utilization of resources. Effective utilization of resources, hardware and software resources. The other important goals also include reliability, ability to deliver, scalability, robustness. These are important goals. I do remember बच्चों, in one of the GATE exam, earlier GATE exam, एक paper में there was a question with regard to goals, and that question was like this. Please listen to me. What should be the primary goal of operating system? Come on, answer me, boys and girls. What should be the question which was asked was, what should be the primary goal of operating system? 4 options were given. So suppose if I give you 4 options as here A, B, C, D like this, A, B, C, D. Suppose if you would have been answering that question, what option would you have selected? Come on. Security is a function of operating system, बच्चों. That is correct. Reliability, portability, all these are goals. बोलिएगा, अगर आप वो आंसर कर रहे हो क्वेश्चन, तो which option will you go for? When I say primary goal of operating system, should it be convenience or efficiency or reliability or scalability? बोलिएगा. Very correct. Very correct. Many people are saying the correct answer. Correct answer है convenience. Why convenience? You apply common sense. Common people like you and me and others, when we want to use the operating system, what kind of operating system we want? We want an easy to use environment or an efficiency environment? We want easy to use. उसका best example है Unix and Windows. देखिएगा बच्चों, Windows operating system develop होने से पहले, Windows develop होने से पहले, the predominant operating system जो market में था, वो था Unix. Unix was highly dominated operating system before the coming up of Windows. लेकिन Unix को use करने के लिए काफी आपको learn करना पड़ेगा. You have to learn, remember a lot of things, because it is not GUI based. It is not GUI based. So not all people could use the operating system Unix. They have to take special training for learning how to use Unix. लेकिन जैसे ही Windows market में आया, everybody got it very easy to understand operating system, to learn operating system. Why? Because it is easy to use. So majority के perspective से सोचना पड़ेगा what should be the primary goal. I don't say that efficiency is not important. Efficiency is important. Unix is more efficient than Windows, but still people given the 2 options, Windows and Unix, कौन सा prefer करोगे? Windows prefer करोगे because it is easy to use. I don't have to remember command line arguments. I don't have to remember commands in the case of Windows. I can plug and play, start playing with Windows. So that is why, from majority perspective, convenience becomes the primary goal, efficiency becomes the secondary goal. लेकिन ऐसा नहीं है, again based on different computing environments. Listen to me, boys and girls. Based on different computing environment. जैसा हम अगर personal computing की बात करोगे, convenience is important goal. लेकिन real time systems जहां पर deadline constraints रहेंगे, right? Embedded system, real time systems, वहां पर convenience का कोई रोल नहीं रहेगा, efficiency. उसी तरह अगर आप मोबाइल एनवायरनमेंट की बात करोगे, मोबाइल कंप्यूटिंग की बात करोगे, वो एनवायरनमेंट्स में कन्वीनियंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, बैटरी एफिशिएंसी इंपॉर्टेंट रहेगा, बैटरी पावर, एनर्जी. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से बच्चों, कि जैसा जैसा एप्लीकेशन डोमेन्स, कंप्यूटिंग डोमेन्स चेंज होंगे, गोल्स ऑल्सो चेंजेस. सो गोल्स आर डिपेंडेंट ऑन दी कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट्स. तो हमारा जो कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट है वो पर्सनल कंप्यूटिंग, पीसी कंप्यूटिंग डोमेन है. And for that perspective, we say convenience is the important goal. तो ये हो गई बात goals of operating system की. तो functions हम detail में पढ़ने वाले हैं, under process management, memory management, file management, device management, right? All these we are going to study about the functionality. तो चलिए अब next हम topic start करेंगे on a very important topic, types of operating system. So important topic है from examination perspective and also understanding the concepts. बच्चों, when you really want to see the types of operating system, आपको historical perspective से देखना पड़ेगा. उतना डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, डायरेक्टली आपको बताऊंगा. ड्यूरिंग द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर सिस्टम के थर्ड जनरेशन में, मे बी 1950s to 1960s, two major operating systems evolved.
One is called uni-programmed operating system. Important point है बच्चों, बार बार कह रहा हूं मैं, uni-programmed OS and multi-programmed OS. Multi-programmed OS. Two major operating systems, uni-programmed and other is multi-programmed. Can anybody please tell me from your previous knowledge or previous study what is uni-programming? चलिए देखेंगे कौन बताएगा. Yes, Farhan Khan and others, please follow me. What is uni-programming? Chat box में लिख के बताइएगा मुझे, देखेंगे. How many people will tell correctly? What is uni-programming? uni का मतलब एक है, लेकिन मैंने कई बार स्टूडेंट्स को देखा है, they go wrong with the understanding of uni-programming. What is uni-programming? Write the complete definition in the chat box. Write the complete definition of uni-programming in the chat box, boys and girls. Come on. Only one program can be loaded in memory. Very correct, very correct, very correct. चलिए मैं डायग्रामेटिकली आपको समझाने की कोशिश करूंगा. What is the meaning of uni-programming? ठीक है? What is the meaning of uni-programming? We'll try to understand conceptually through a diagram. एक डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है? This is some another diagram. चलिए मैं यहाँ पे नेम करूंगा. This CPU. This is memory, main memory. Whenever I just use the word memory, I am trying to say it is main memory. Remember please. ये है आपकी secondary storage like disk. And this is maybe another input output device like maybe printer, input output device. देखिएगा architecture समझेगा बच्चों. This is very very important for understanding of types of operating system. So memory will be having two parts. One part will be loaded with operating system. जब आप operating system boot करोगे तो operating system यहाँ पर आएगा memory में. This other area, other portion of memory is called user area. User area. Disk पर you will have many programs. Program 1, program 2, program 3, program 4. So many programs are there on disk. बच्चों और कीजिएगा. यूनी प्रोग्राम का मतलब यह है, दिस ऑपरेटिंग सिस्टम हैज बीन डिजाइंड टू मैनेज, लोड एंड होल्ड ओनली वन प्रोग्राम इन मेमोरी. दैट इज कॉल्ड यूनी प्रोग्रामिंग. Ability of the operating system to load and hold and manage only one program in memory, that is called uniprogramming. आप बोलोगे सर यूनिप्रोग्रामिंग का ड्रॉबैक क्या है? What is the drawback of having only a single program? चलिए अंडरस्टैंड करेंगे. देखिएगा, if I have one CPU at a time can run only one program. ये बात आपको याद रखना है हमेशा as a lifetime concept. If I have a single CPU, one CPU at a time can run only one program. At a time can execute only one program on the CPU. तो अब before I continue, I would just like to test your understanding. बच्चों बोलिएगा चैट बॉक्स में लिखकर, can anybody tell me what is the major drawback of uniprogrammed operating system in this setup? देखिएगा setup beautiful है. In this setup, what is the main challenge, main drawback of uniprogramming? Yes, primary memory, secondary memory. That is correct. Come on. Gopal Kumar, please tell. Idleness of CPU. Yes, that is correct. The main challenge of uniprogrammed operating system is idleness of CPU. Idleness of CPU का मतलब ये है कि one program present in memory is not sufficient enough to keep the processor and other devices busy. चलिए understand करने की कोशिश करेंगे. Absolutely correct बच्चों. I am very happy. देखिएगा, the moment I load this single program in memory, this program starts executing its instructions by running on CPU. So बच्चों, as long as this program is busy running on CPU, CPU is busy. As long as it is executing instructions on CPU, it will be busy. Problem जब होगा when this program needs to go for IO operation. Suppose if it leaves the CPU and program perform IO operation on the device. तो जब क्या होगा? CPU idle होगा. क्यों idle होगा? Because there is no other program present in memory to execute. Program CPU पर run होने के लिए requirement ये है कि the program should be in memory. The program should be in memory. But memory operating system बोलेगा भैया, I cannot manage multiple programs in memory. That is my limitation. So therefore, we say that one single program present in memory is not sufficient
to keep the processor and the IO devices busy all the time. So therefore, it may lead to heavy idleness of CPU, जिसकी वजह से CPU efficiency या throughput will come down. So our objective is to keep the processor busy all the time. और वो possible कब है? That is only possible when I have multiple ready to run programs present in memory. तो मतलब यही आर्किटेक्चर पे अगर मैं सिर्फ आपको मेमोरी का व्यू बता दूं, यहां पर मेमोरी का व्यू बता दूं मल्टी प्रोग्रामिंग का, I will have memory divided into two parts. One part will store operating system, and in the other part I will store other ready to run programs. तो हम बोलेंगे ability of the operating system to have multiple ready to run programs in memory, तो ये programs हमने disk से multiple यहां पर लाए हैं, and operating system will now schedule one of the program. As long as the program is running on CPU, it is okay. But जैसे ही program छोड़ देगा CPU को, I can switch the CPU to another program. My purpose is solved. So that is multi-programming. जितने program memory में रहेंगे, हम उसे एक term बोलेंगे degree of multi-programming. multi-programming को हम short में लिखेंगे MPR. Degree of multi-programming. तो degree of multi-programming एक से बढ़ के रहेंगे. In the case of multi-programmed OS, uniprogram में always one. Degree of multi-programming is always one. यह concept. तो बच्चों, अगर मैं पूछूं आपसे, अगर आपको इंटरव्यू में पूछा जाए what is the basic objective of multi-programming, main goal of multi-programming, तो आप क्या बोलोगे बच्चे? चार्ट बॉक्स में लिख के बताइए मुझे. If I ask you what is the main goal of multi-programmed operating system, what will you say, please? बोलिएगा. What will you write in the chat box? In the chat box, what will you write? The main objective of multi-programming. The main objective of multi-programming, the main goal of multi-programming is to maximize CPU utilization. Maximize CPU utilization. CPU जैसा आपका utilize होगा maximum, आपका throughput levels will increase. Throughput will increase. Efficiency will increase. That is the main objective. तो हमारा मेन मल्टी प्रोग्रामिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव है मल्टी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का इज टू मैक्सिमाइज थ्रूपुट, मैक्सिमाइज सीपीयू यूटिलाइजेशन. समझ गया ना? एग्जांपल्स ऑफ मल्टी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड विंडोज, यूनिक्स, लिनक्स, मैक एंड सो ऑन. So many operating systems. Uniprogrammed operating system का best example है DOS, disk operating system from Microsoft. Uniprogrammed operating system. एक और बात मुझे आपको बतानी है कि मल्टी प्रोग्रामिंग या मल्टी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, देयर आर टू टाइप्स. बोलिएगा. मल्टी प्रोग्रामिंग इज ऑफ टू टाइप. बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों ये. बोलिएगा. मल्टी प्रोग्रामिंग इज ऑफ टू टाइप्स. व्हाट आर द टू टाइप? देखेंगे कौन रेस्पॉन्ड करेगा. कम ऑन, कौन रेस्पॉन्ड करेगा? मल्टी प्रोग्रामिंग इज ऑफ टू टाइप्स. व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग? come on fast. There are two types of multi programming. There are two types of multi programmed operating system. Very good, very good. People are knowledgeable. Excellent. Two types. One is called non-preemptive, and the other is preemptive. हम हमेशा preemptive को शॉर्ट में लिखेंगे here after PR. non-preemptive को हम शॉर्ट में लिखेंगे NPR. preemptive का मतलब है forceful deallocation. forceful deallocation from CPU. अंडरस्टैंड कर लेंगे थोड़ा बहुत. प्लीज अंडरस्टैंड. नॉन प्रीएम्प्टिव एग्जीक्यूशन में यह मतलब है once the operating system give the charge of CPU to some process, then the process will relieve the CPU voluntarily on its own. No forceful deallocation. मतलब जो प्रोसेस रन हो रहा है CPU पर, उसे कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा. वो प्रोसेस ऑन इट्स ओन वॉलंटरली रिलीज करेगा. इसीलिए हम इसे बोलेंगे, अनदर नेम ऑफ नॉन प्रीएम्प्टिव, अनदर नेम इज वॉलंटरी रिलीज. वॉलंटरी रिलीज ऑफ CPU on its own.
जब प्रोसेस कंप्लीट होगा या प्रोसेस नीड टू गो फॉर आईओ ऑपरेशन, देन ओनली इट विल लीव द सीपीयू, दैट इज कॉल्ड वॉलंटरी रिलीज. सो दिस इज नॉन प्रीएम्प्टिव एग्जीक्यूशन. इसके ड्रॉबैक रहेंगे. इसके ड्रॉबैक ये रहेगा लैक ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस, लैक ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस, लैक ऑफ इंटरैक्टिवनेस, लैक ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस, लैक ऑफ इंटरैक्टिवनेस. क्यों? जब एक प्रोग्राम पर आप पूरा कंप्लीट लिबर्टी छोड़ देंगे, फ्रीडम दे देंगे कि भैया आपकी मर्जी, आप जब चाहो सीपीयू को छोड़ दो, देन अदर प्रोग्राम्स विल कीप ऑन वेटिंग. अदर प्रोग्राम्स को कब मिलेगा चांस? इंडेफिनिट. तो स्टारवेशन प्रॉब्लम होगा, इंटरैक्टिवनेस प्रॉब्लम होगा नॉन प्रीएम्प्टिव अप्रोच में. उसे रिमूव करने के लिए, इंटरैक्टिवनेस को रिमूव करने के लिए या सिस्टम को रेस्पॉन्सिवनेस बनाने के लिए वी गो फॉर प्रीएम्प्टिव. Preemptive. This preemption, forceful deallocation of the program from CPU can happen maybe based on time or maybe based on priority, and like that there can be other factors also for enforcing preemption. Preemption के लिए. और यहां पर आपको बताता चलूं कि if I use time as a factor for enforcing preemption, such operating systems are also called time shared OS. आपने पढ़ा होगा word time sharing. If I dedicate a time to every process, भैया आप इतने टाइम में जो चाहे कर लो. If your time is over, then I am going to preempt you and give the chance to others. Responsiveness बढ़ाने के लिए we go for time as a preemptive factor. So such operating systems are also called time shared operating systems. Like that I can use priority for enforcing preemption. Lastly, आपको और एक बात ये कहना है बच्चों कि if I use, for example, these preemptive based multi-programmed operating systems are also sometimes called multitasking. So multitasking essentially is preemptive based multi-programming, multitask. The word multitask is generally used in Windows family. Windows and Microsoft, Windows family they use the word multitask, or Unix family they generally use the keyword multi-program. So of course program and task are synonyms. प्रोग्राम एंड टास्क में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा. यू कैन इवन यूज सिनोनिमसली. तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, यूनि प्रोग्रामिंग, टाइप्स ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग. देखिएगा डायग्राम यहां पर मल्टी प्रोग्रामिंग का है. मेमोरी लेआउट ऐसे रहेगा. दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम लोअर एड्रेस टू हायर एड्रेस. यहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम लोडेड है एंड देन देयर इज ए प्रोविजन फॉर अदर प्रोग्राम्स या अदर प्रोसेसेस. सो दैट इज द थिंग. अब नेक्स्ट बात करेंगे हम, इंपॉर्टेंट टॉपिक है गेट एग्जाम पर्सपेक्टिव से, हार्डवेयर सपोर्ट. हार्डवेयर सपोर्ट या आर्किटेक्चरल रिक्वायरमेंट. हार्डवेयर सपोर्ट या आर्किटेक्चरल रिक्वायरमेंट फॉर implementing multi-programmed operating system. बहुत important topic है बच्चों. There were questions in earlier papers based on this. What is the hardware support or architectural requirement for implementing a typical multi-programmed operating system environment? Number one, from the input-output systems, from the input-output, particularly secondary storage devices, you need the support of DMA. बच्चों प्लीज बताइएगा मुझे चैट बॉक्स में, व्हाट डज DMA मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम और इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन. DMA का मतलब ये है, क्या है? व्हाट डज DMA मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम और इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन. जब हम वर्ड DMA बोलेंगे तो मतलब क्या है DMA का? व्हाट डज DMA स्टैंड फॉर? कम ऑन, anybody? Yes, that's right. Direct memory access. आपने सब्जेक्ट ऑफ CO में पढ़ा होगा कि devices can support different modes of transport. Direct memory access. For implementing a typical multi-programmed operating system, all secondary storage devices is desirably to support DMA operation, direct memory access. वरना प्रोग्राम कंट्रोल ट्रांसफर से नहीं होगा, इंटरप्ट ड्रिवन ट्रांसफर से पॉसिबल है लेकिन एफिशिएंट नहीं रहेगा. It will not be efficient. Direct memory access से efficiency आपकी बढ़ेगी for implementing typical multi-programmed operating system. Next, from memory systems, what do you require? Memory systems. I require the support for address translation.
एड्रेस ट्रांसलेशन। इसका हम डिटेल मेमोरी मैनेजमेंट में देखेंगे। यहां पर सिर्फ आपको इतना बताता चलूं कि द एड्रेस विच इज जनरेटेड बाय द सीपीयू इन द केस ऑफ मल्टी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड वर्चुअल एड्रेस, एंड द एड्रेस विच इज एक्चुअली नीडेड टू एक्सेस मेमोरी इज कॉल्ड फिजिकल एड्रेस। ये जो अप्रोच है, ये जो मैकेनिज्म है by way of which you convert this logical address to physical address or virtual address to physical address, is a hardware support from memory system that is called address translation support. So every multi-programmed operating system environment should be supported from memory management side through a memory management hardware which will have the capability to perform this address translation. TLB is also an address translation mechanism. Examples of this address translation mechanism is page table, या TLB, these are all examples, या बेस रजिस्टर बोलिए आप, so that is address translation support. हाँ बच्चों, थर्ड एंड लास्ट पार्ट इज CPU. देखेंगे कौन बताएगा चैट बॉक्स में. For implementing a typical hardware, for implementing a typical multi-programmed operating system, what hardware support is needed from processor? Star topic है, यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ आपको. Lot of questions were asked in earlier papers based on this. Again, I'm telling you, boys and girls, for implementing a multi-programmed operating system, from the input-output, that is secondary storage devices, I need DMA support. From memory system, I need address translation support like page table, TLB, etc. And likewise from processor, from CPU side, what is needed? What hardware support from CPU is needed for the implementation of a typical multi-programmed operating system environment? बोलिएगा बच्चों, what is needed? What is needed is called, listen to me, dual mode operation, dual mode support, या dual mode operation. The processor should have the capability to support dual mode operation, dual mode support or dual mode operation. Every processor, Intel processor, Motorola processor, ARM processor, जो भी processor हो for multi-programming support or multi-programming implementation should provide a dual mode operation support, dual mode support. Can anybody tell me what dual matlab? दो modes. So what is the meaning of dual mode? What are the two modes that the processor should support? बोलिएगा. हाँ, आयुष सोने. There are two modes. The two modes are user mode and kernel mode. User mode and kernel mode. User mode and kernel mode. Kernel mode is also called privileged mode. Privileged. Also called supervisor mode. This is non-privileged. Non-privileged. User mode and kernel mode. बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. Lot of questions were asked based on this topic in earlier paper. हम थोड़ा यहाँ पर डिस्कशन करेंगे. यूजर मोड एंड कर्नल मोड. चलिए डायग्राम्स उतार कर समझाऊंगा. प्लीज हैव पेशेंस एंड फॉलो इट केयरफुली. थोड़ा इन्वॉल्व टॉपिक है, थोड़ा इन्वॉल्व टॉपिक है, बट इफ यू फॉलो इट आई एम वेरी श्योर यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल. अगर हम ऐसा डायग्रामेटिकली समझाएंगे, दिस लाइक CPU, इट कैन वर्क इन टू मोड. दिस इज कॉल्ड कर्नल मोड, दिस कॉल्ड कर्नल मोड, एंड दिस कॉल्ड यूजर मोड, UM and KM. Point number one, all operating system routines, operating system programs, operating system utilities, they run in kernel mode. Point number one. User mode, only user applications will run. User applications. जो हमारे applications होंगे, जो हमारे commands होंगे, जो हमारे programs होंगे, they run in user mode. And all operating system programs, operating system routines run in kernel mode. Point number one. Point number two, जो execution होगा दोनों modes में, there should be some difference. There should be some difference. The difference, main difference is that user mode is non-atomic. मतलब ये है preemptive. Simple points. Kernel mode, most of them is atomic, non-preemptive. Non-preemptive. Even though we have the philosophy of atomic kernel, but let us not talk about, let us go with classical approach. So this is atomic. The fundamental difference between user mode and kernel mode.
लाइक जब हमारा सी प्रोग्राम रन करोगे, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन प्रोग्राम, कंपाइलर्स, डेटाबेसेस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये जितने भी सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से दे रन इन यूजर मोड, एंड ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम रूटीन्स, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम दे रन इन कर्नल मोड. फिर हमें और एक चीज समझने की जरूरत है कि हाउ डू वी नो इन विच मोड द प्रोसेसर इज रनिंग. Please understand, in the computer hardware, in the processor, there is a special bit. There is a special bit in the CPU. There is a special bit in the CPU, which is called mode bit. एक रजिस्टर मान लीजिए आप, एक रजिस्टर की फील्ड है जिसे हम बोलेंगे mode bit. It's a binary bit. It can take two values, 0, 1. 0 means kernel mode, 1 means user mode. 0 means kernel mode, 1 means user mode. So by means of mode bit, we can always tell right now in which mode the processor is executing, user mode and kernel mode, right? So again I tell there are two modes in which the CPU can execute, or the programs running on CPU can execute, either user mode execution or kernel mode execution. Number 2, all. Atomic मतलब non-preemptive, atomic. जैसा databases में आपने पढ़ा होगा atomicity of transaction, उसी तरह atomic का मतलब non-preemptive. गोपाल कुमार. See, convention can be anything. Convention we don't bother. 0 is one mode, 1 is another mode. Simple point. चलिए second point पे आएंगे. हमने कहा most of the time user mode is non-atomic, मतलब preemptive. मतलब क्या है preemptive का? कुछ part of instruction we execute some instruction and then it can get preempted. It can get preempted. Non-atomic मतलब once it starts its execution, it will run till completion without any interruption, without any preemption. ये है मतलब atomicity का. Yes, this mode bit generally is found in PSW, program status word, processor status word. चलिए, खाली mode bit remember कीजिएगा बस. So I would like to tell you that most of the time, right, where all applications run in user mode and all user applications run in user mode and operating system routines run in kernel mode. The next important point in relevance to this discussion is a very, very, very important discussion that we need to take on, something called mode shifting. Shifting from user mode to kernel mode. See, operating system is a service provider. Listen to me, boys and girls. Operating system is a service provider. This is a service provider. And we are service users. So whenever we as service user want any service from operating system, so we have to change the mode from user to kernel, because the service is in kernel mode and we are running in user mode. तो जब भी हमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विस की जरूरत होगी, वी हैव टू चेंज द मोड फ्रॉम यूजर टू कर्नल. जब सर्विस एग्जीक्यूट हो जाएगी, देन वी हैव टू कम बैक फ्रॉम कर्नल टू यूजर. सो सेपरेटिंग दीज टू मोड्स टू प्रोवाइड दैट सर्विसेज, वी हैव एन इंटरफेस हियर, दोनों सेपरेट करने के लिए एक इंटरफेस होगा जिसका नाम है एपीआई या सिस्टम कॉल इंटरफेस, SCI. API, application programmers interface, या system call interface. It is system call interface that separates the two modes or through which the service from user to kernel is accessed. इसकी एनालॉजी समझने के लिए देखिएगा बच्चों, इसकी एनालॉजी समझने के लिए एक सिंपल एग्जांपल है मैं दूंगा, आप उसे फॉलो कीजिएगा. देखिएगा, गवर्नमेंट इज अ सर्विस प्रोवाइडर, सेंट्रल गवर्नमेंट को ले लीजिए सर्विस प्रोवाइडर, एंड पब्लिक लाइक यू एंड मी सर्विस यूजर. लेकिन जब भी मुझे कोई गवर्नमेंट की सर्विस अवेल करना है तो हम कैसे अवेल करेंगे? फॉलो माय पॉइंट. उसका एग्जांपल ये है बच्चों, अगर आपने पासपोर्ट बनाना है या अगर आपने आधार कार्ड बनाना है, आधार कार्ड या पासपोर्ट, ठीक है, यू कैन नॉट गो टू ए थर्ड पार्टी DTP ऑपरेटर, कहीं भी आप जाओ और बोलो भैया आई वांट टू मेक आधार कार्ड और पासपोर्ट, विल इट वर्क? हालांकि उसके पास पूरी मशीनरी है, पूरा रिसोर्सेस है, पूरा प्लेटफॉर्म है through which it can definitely make an Aadhaar card like document or passport like document, but will it be valid? क्या वो valid होगा? नहीं होगा. Even though he has the capability, लेकिन उसकी जो सर्विस है, it won't be helping. तो आपको कहां जाना पड़ेगा आधार कार्ड बनाने के लिए? बहुत से सुनिएगा बच्चों, अगर ये एनालॉजी आप समझोगे, ये आपको ये मोड शिफ्टिंग समझ में आ जाएगी. ये एनालॉजी अगर समझो, if you want to make आधार कार्ड, if you want to make passport, what do? Will you go to New Delhi? Will you go to Parliament? Parliament is the core. Cabinet ministries is the core. Will you go there? No, you don't go there. उसके लिए क्या है? गवर्नमेंट ने अपना एक इंटरफेस प्रोवाइड किया है. आधार सर्विस सेंटर्स, अप्रूव्ड आधार सर्विस सेंटर्स.
उसी तरह पासपोर्ट केंद्रा सेंटर्स, am I right? These are called interfaces. ये है interfaces to government. पासपोर्ट केंद्रा सेंटर इज एन इंटरफेस, आपको सिर्फ वहीं पे जाना पड़ेगा टू अवेल दैट सर्विस. उसी तरह आधार सेंटर्स, यू हैव टू गो देयर, दे आर गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्रोवाइडेड इंटरफेसेस, तो यू हैव टू गो देयर, यू हैव टू सबमिट, यू कैन नॉट सबमिट योर ओन डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन के, दे विल हैव देयर फॉर्मेट, और उनके फॉर्मेट के हिसाब से आपको डेटा देना पड़ेगा, एंड देन दे विल गेट योर डेटा प्रोसेस्ड, एंड देन दे विल इश्यू यू द आधार कार्ड एंड passport. Are you getting my point? Same way is like this. So you have to go to this, you have to go through this interface to avail this operating system service. You cannot go it. So the means or mechanisms through which you can avail these services is called system call. System call. SCI stand for system call. System call interface. System का यहां पर मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम. It is a call to operating system for availing the service. An example of system call जो आपने पढ़ा होगा, जिसका नाम है fork, very important call. Fork system call. It is used for creating a child process. So this, it's creating a child process is an operating system functionality. I cannot create the process. So we have to avail that service. तो ये fork system call जब आप प्रोग्राम में लिखोगे, when you use it in your C program or C++ or Java program, it will result in creating what is called a privilege instruction. It will result in a privilege instruction. जब ये privilege instruction execute होगा, then this privilege instruction, execution of a trap instruction या software interrupt instruction, the execution of this will change the mode bit from 0 to 1 or 1 to 0 and then execute the routine and then come back. उसका एक process है जो यहाँ पे diagrammatically explain किया गया है. Please follow it. So बच्चों फिर से एक बार summarizingly कह रहा हूँ, follow कीजिएगा. Every processor for multi-programmed operating system implementation should support two modes: user mode, kernel mode. Number one, all user application execute or run in user mode. All operating system routines and operating system programs run in kernel mode. Number two, user mode is non-atomic, मतलब preemptive. मतलब प्रोग्राम थोड़ा एग्जीक्यूट होने के बाद कभी भी प्रीएम्प्ट हो सकता है यूजर मोड में, लेकिन कर्नल मोड में प्रीएम्प्शन नहीं होगा as far as atomic kernels are concerned. Non-preemptive execution. Number two, yes, kernel is highly abstract, Saurav Kumar. Number two, the mode in which the processor is executing is indicated by a mode bit in PSW, which can take two values, 0, 1. Number three, this availing the services or mode shifting is done whenever we require any operating system service. Operating system services are availed through system calls. What is system call? It's a call, it's a function to call to operating system for accessing or availing some services. So when we execute this system call, what happens is it will result in changing the mode from user to kernel, right? By changing the mode bit, executing the kernel routine, and then again changing the mode back from kernel to user and continuing the application, which is shown over here. So देखिएगा बच्चों, dual mode operation के ऊपर यहाँ पर एक abstract है, understand कीजिएगा. It allows operating system to protect itself and other system components, user mode and kernel mode. Mode bit provided by hardware. So we can have, so mode bit indicate in which mode you are running, like 0 or 1 or 1. So some instructions designate as privilege only execute in kernel. All privilege instructions execute in kernel mode. तो यहाँ पर जो diagram मैंने कहा, वही diagram यहाँ पर बता दिया गया है. So please have a look. Please have a look. So this is user process executing. Suddenly it uses system call. So a trap or interrupt is generated. This is the interface, bachcho. Trap is generated. Mode bit is equal to 0, right? Change the mode bit to kernel from 1 to 0. Execute the system call. Change the mode bit back to 1 and return from the kernel back to user. So this is how the mode shifting or transition from user to kernel mode happens, right? This is what your mode shifting or user mode to kernel mode transition happens for execution of a system call. This process is called mode shifting or changing the mode from user to kernel. Any doubt, any question so far in this topic? Please understand. Please tell me if you have any questions so far, because mode shifting का जो paradigm है वो काफी important paradigm है, तो उसके intricacies, उसके intricacies आपको अच्छे तरीके से समझना चाहिए. Okay, Anush Gowda, thank you.
Any questions so far in the mode shifting part or in the architectural requirements of multi-program support? If you have anything to ask, you please ask me now before we proceed. Come on. Anything that you would like to ask? ओके, एवरीथिंग इज क्लियर. देखिएगा समराइजिंगली यहां पर डिस्कस करेंगे. ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा हमने कहा सर्विस प्रोवाइडर है, तो कौन से सर्विसेज प्रोवाइड करता है. यस, प्रोसेस टू प्रोसेस शिफ्ट टाइम इज लेस देन प्रोसेस टू कर्नल. Sagar Gupta will talk about that in the next class when I say process switching versus mode shifting in kernel mode. In the CPU scheduling chapter we'll talk about it, don't worry. चलिए देखेंगे यहाँ पर user interface. Sir, every operating system will provide some user interface like GUI or command line interface, etc. Then program execution support like compilers and loaders and linkers, etc. Provisions for IO operations, file system manipulation, all these are different categories of services which the operating system provide to its users. उसी तरह services related to communications, that means exchanging information over network, etc. Capabilities for error detection, these also a service provided by operating system. उसी तरह other operating system services like resource allocation, many types of services like logging, protection, security, etc. So operating system has a huge variety of services which is offered to its users and programmers, and users and programmers like you and me can access these services through system calls, through other resources. तो देखिएगा एक overview, bird view है, an abstract view of operating system services. I have lowest level hardware, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज है. यहां पर सिस्टम कॉल इंटरफेस है. दिस इज आवर यूजर इंटरफेसेस, लाइक आपका GUI है, टच स्क्रीन है, कमांड लाइन है, इंटरफेसेस. या फिर आपके यहां पर एप्लीकेशंस भी हो सकते हैं. यू कैन हैव एप्लीकेशंस. थ्रू एप्लीकेशंस यू कैन एक्सेस सिस्टम कॉल्स. थ्रू एप्लीकेशंस यू कैन एक्सेस सिस्टम कॉल्स. या तो कमांड से करो या ऐसे भी कर सकते हो आप. तो एक क्लियर डायग्राम है दैट शोज द एंटायर व्यू ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. See, real-time operating system is a separate operating system. Saptak Das, Mr. Das, real-time operating system is a separate kind of operating system. Command line interfaces क्या हो सकते हैं? वो shell है, shell prompt जैसा. For example, in Unix it is denoted by dollars or it is indicated by a hash. At this you type the commands. That is called a shell. ठीक है? या देखिएगा ऐसा shell ऐसे दिखेगा आपको. This is hash prompt. यहां पर आप चाहो तो टाइप कर सकते हो कमांड्स. व्हेन यू टाइप द कमांड इट विल गिव यू द लिस्ट. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कमांड लाइन इंटरफेस. उसी तरह यू हैव अदर यूजर इंटरफेसेस. देखिएगा टच स्क्रीन इंटरफेस ऑफ योर सेल फोन, दिस आल्सो ए कमांड लाइन इंटरफेस बाय वे ऑफ विच यू कैन इंटरैक्ट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल. या फिर आपका विंडोज, ये मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का GUI है. देखिएगा दिस इज अ GUI. मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का GUI है. उसी तरह आपका विंडोज का GUI भी हो सकता है. तो these are all command line interfaces that allows you to access operating system services. Next, operating system functionality की बात अगर करोगे आप, we have detailed functionality. यहाँ पर list out किया हूँ फंक्शन जो हम देखने वाले हैं in detail in our forthcoming classes. Like we have activities or services or functions under process management activities, जैसे कि related to creating and deleting processes, suspending processes, ये सब डिटेल्स हम देखेंगे. सब डिटेल्स के बारे में हम बात करेंगे. I mean mechanism for dealing with deadlock, process communication, synchronization, is it not? All these services, all these functions come under process management. उसी तरह memory management के services है, जैसे keeping track of which parts of memory are free and which parts of memory are in use, deciding which process and data to move into, that is suspend, allocating and deallocating. These are all parts of memory. उसी तरह फाइल सिस्टम के सर्विसेज है. जब आपको ये PPT मिलेगी या PDF मिलेगी, जब आप डिटेल में इसे देख सकते हो. अब मैं यहाँ पर पूरा रीड करना इज नॉट रेलेवेंट और इज नॉट मीनिंगफुल. मास स्टोरेज मतलब सेकेंडरी स्टोरेज. सो आई हैव सर्विसेज विथ रिगार्ड टू mass storage functions. Through CLI and GUI we access system call, and through system call we access operating system utilities. Hariom, yes. Through CLI or your user program you can always access operating system services through system calls. That is absolutely correct. चलिए, उसी तरह caching related services, cache memory के related services है for operating system, right? So देखिएगा एक टेबल है, बाद में आप इसे देख लीजिएगा. That indicates, because I have highlighted some important thing, characteristic of various types of secondary storage.
कैरेक्टरिस्टिक, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है। देखिएगा रजिस्टर जो है, रजिस्टर मेमोरी, इट साइज इज जनरली लेस देन 1 KB, कैशे मेमोरी लेस देन 16 KB, मेन मेमोरी कैन गो अप टू 64 GB, सॉलिड स्टेट SSD डिवाइस टेराबाइट्स, मैग्नेटिक डिस्क 10 TB, लाइक दैट। इंप्लीमेंटेशन टेक्नोलॉजी है। एक्सेस टाइम, मैंने क्या कहा, रजिस्टर का एक्सेस टाइम 0.25 to 0.5 नैनोसेकेंड्स, 0.5 to 2.5 नैनोसेकेंड्स, 80 to 250 नैनोसेकेंड्स, 25,000 to 50,000 नैनोसेकेंड एंड 5 लाख नैनोसेकेंड एंड सो ऑन। ये एक्सेस टाइम। उसी तरह बैंडविड्थ, डेटा ट्रांसफर रेट है। सो मेमोरी के पूरे कैरेक्टरिस्टिक है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस इसे एक बार पढ़ लीजिएगा बाद में, एंड कीप इट होल्ड। एंड दिस इज continuing part, managed by whom, compiler or hardware or operating system, backed up by whom, like that all details are there. उसी तरह प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी के फंक्शंस है एंड सो ऑन। देखिएगा ये भी एक सिंपल टॉपिक है बच्चों, मैं आपके नोट्स के लिए लेके आया हूं, बाद में इसे पढ़ लीजिएगा। वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट, जैसे मैंने कहा पर्सनल कंप्यूटिंग है, उसी तरह पीयर टू पीयर, डिस्ट्रीब्यूटेड, क्लाउड कंप्यूटिंग, मोबाइल कंप्यूटिंग, नेटवर्क कंप्यूटिंग, रियल टाइम सिस्टम्स, दीज आर ऑल द डिफरेंट कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट्स। उसके बारे में भी थोड़े थोड़े डिटेल्स है, आप अपने फ्री और लीजर टाइम पे पढ़ लीजिएगा। लाइक ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग इज योर पर्सनल कंप्यूटिंग, पीसी बेस्ड कंप्यूटेशन, पर्सनल कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट बोलेंगे आप, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के बेसिस पे है। उसी तरह मोबाइल कंप्यूटिंग, क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट, पीयर टू पीयर, क्लाउड कंप्यूटिंग, रियल टाइम। तो एवरी डिफरेंट इन डिफरेंट कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट्स वी यूज डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स, और हर एक का अपना अपना आर्किटेक्चर रहेगा, हर एक का अपना गोल रहेगा। यही आपको बात करना है। हाँ, आपको पीपीटी मिल जाएगा। सो दीज आर द सम ऑफ द डिटेल्स ऑफ ऑल दिस कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट्स, यू कैन कंफर्टेबली गो थ्रू ऑल ऑफ देम। लास्ट में आपको एक बात ये कहना है बच्चों, व्हाट आर दी सम ऑफ द इंपॉर्टेंट कर्नल डेटा स्ट्रक्चर। जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंप्लीमेंट करोगे, like the implementers or the developers of operating system generally use what data structures, कौन से important data structures operating system के development में use होते हैं, वो यहाँ पर एक simple highlight है, देख लीजिएगा प्लीज। यहाँ पर I can generally most of the time use singly linked list, you know the structure of singly linked list, doubly linked list, circular linked list। उसी तरह binary search trees are used, and then hash tables, hash maps are used, bitmaps are used, bitmaps. So these are the various data structures which are used in the implementation of most of the kernel data structures: singly linked list, doubly linked list, circular linked list, binary search trees, hash maps, bitmaps. These are arrays. List means array also. Arrays are also used. Bitmaps is generally in the form of arrays. So these are differently used. ठीक है? So this is what is the brief introduction and background. इसके बाद हमें डिस्कशन करना पड़ेगा प्रोसेस कॉन्सेप्ट्स, थ्रेड्स, राइट, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोसेस एंड थ्रेड्स, ये हम डिस्कस करेंगे परहैप्स इन द नेक्स्ट लेक्चर। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर पे आने से पहले कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास बेस्ड ऑन द डिस्कशन दैट वी मेड, देखेंगे आर यू एबल टू वर्क आउट और नॉट। क्या क्वेश्चन हम डिस्कस करें, और शुड आई गिव इट फॉर होमवर्क फॉर यू बॉयज एंड गर्ल्स, प्लीज टेल मी। आई हैव फ्यू बेसिक क्वेश्चंस, PYQs है based on the discussion we made. Shall we solve it now, or should I give it as homework and discuss tomorrow? Yes, arrays, linked list, everything is all the data structures. Tell me boys and girls, should I give these questions as homework? Will you work out, or shall we discuss now? Choice is yours. Shall we discuss, or ओके विल डिस्कस? मेनी पीपल आर सेइंग डिस्कस। चलिए बिल्कुल 2-2 मिनट टाइम दूंगा, आपने उसे वर्कआउट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कौन बोलेगा। आंसर दिस फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अ PYQ, लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू विल वर्क आउट। कम ऑन, आई एम डिस्कसिंग फर्स्ट क्वेश्चन। आंसर दिस क्वेश्चन बॉयज एंड गर्ल्स। ए प्रोसेसर, CPU, प्रोसेसर का मतलब है CPU, प्रोसेसर का मतलब है CPU, नीड सॉफ्टवेयर इंटरप्ट फॉर व्हाट पर्पस? कम ऑन, आंसर मी, आंसर दिस क्वेश्चन। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट जनरेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन। जैसे आप सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट करोगे ना, जैसा आप सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट करोगे, whenever you execute a system call,
it will result in generating a software interrupt. System call जब आप execute करोगे तो एक software interrupt generate होगा. So that is called interrupt generated from software is called software interrupt. तो processor needs software interrupt for what purpose? क्या purpose के लिए? I'm very happy many people are telling correct answer. To obtain system services, that means operating system services which need execution of privilege instruction. बिल्कुल सही जवाब. Answer is C. It is not to test the interrupt system, no. It is not supposed to use for implementing coroutine concepts supported in Java also, another abstract, what do you call, OOPS-based programming languages or concurrent programming languages. There is something called system coroutines. Coroutines in short stand for concurrent routines. Concurrent routines, routines that execute concurrently. ठीक है, अभी 2 मिनट में हम कंप्लीट कर लेंगे रक्षक, डोंट वरी. रिटर्न फ्रॉम सब रूटीन, नो दैट्स नॉट करेक्ट. इसका आंसर बता दीजिएगा, बहुत सिंपल है बच्चों. यू शुड बी वेरी हैप्पी टू वर्क आउट दिस सेकंड क्वेश्चन. डोंट वरी, मैं बिल्कुल 2-3 मिनट में क्लोज कर रहा हूं क्लास. 2-3 मिनट में क्लास क्लोज कर रहा हूं, डोंट वरी. टाइमिंग्स क्लास के 6 o'clock से रहेंगे, 6 PM ऑनवर्ड्स एवरी डे. एवरी डे क्लास टाइमिंग्स विल बी फ्रॉम 6 o'clock ऑनवर्ड्स. और कल का हमारा टॉपिक होगा प्रोसेस एंड थ्रेड कॉन्सेप्ट्स. प्रोसेस एंड थ्रेड कॉन्सेप्ट्स, इसका आंसर बता दीजिएगा बच्चों. बी केयरफुल बॉयज एंड गर्ल्स. ए CPU has 2 modes, privilege and non-privilege. In order to change the mode from non-privilege to privilege, what is needed? What is needed? Come on. We actually need a system call which will generate a software interrupt to change the mode from user to kernel. अब यहां पर system call तो दिया नहीं गया है आंसर, राइट? सिस्टम कॉल दिया नहीं गया, लेकिन क्या दिया गया है ऑप्शन? सॉफ्टवेयर इंटरप्ट दिया गया है, तो हमें कंपलसरी सॉफ्टवेयर इंटरप्ट लगेगा. तो करेक्ट आंसर फॉर दिस इज बी. वी नीड अ सॉफ्टवेयर इंटरप्ट टू चेंज दैट, बिकॉज दैट इंटरप्ट विल चेंज द मोड बिट फ्रॉम 0 to 1. Interrupt service routine of that interrupt will change the mode bit from 0 to 1, not D. Correct answer is B. Correct answer is B. चलिए सेम क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन, लुक एट दैट. सिस्टम कॉल्स आर यूजुअली इन्वोक्ड बाय यूजिंग व्हाट? अभी हमने डिस्कस किया जस्ट बिफोर दिस क्वेश्चन. इट इज इन्वोक्ड थ्रू सॉफ्टवेयर इंटरप्ट. सो करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ए. करेक्ट आंसर इज ए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और रादर लास्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है. सोच समझ के आंसर बताइएगा बच्चों. लास्ट क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के बताइएगा प्लीज. Come on. Let me see how many of you will tell the correct answer for this. Not visible. Interrupt. First option is interrupt from hard disk. Option B, interrupt from mouse. Option C, interrupt from keyboard. Option D, interrupt from CPU temperature. The gate question. A computer handles several interrupt sources, of which the following are relevant to this question. Interrupt from CPU temperature sensor, that means it is raised when CPU temperature become high. Interrupt from mouse, interrupt from keyboard, interrupt from hard disk. क्वेश्चन ये है which one of these will be handled at the highest priority. मतलब ये है, सीधी बात ये है कि out of all these possible interrupts, which interrupt should be of high priority? कौन सा ज्यादा interrupt priority पे रहेगा? Naturally वही रहेगा, right? वही रहेगा जो CPU टेम्परेचर को डिटेक्ट करेगा. अगर CPU टेम्परेचर हाई है, आप उसको priority नहीं दोगे तो आपका CPU बस्ट हो जाएगा, CPU बर्न हो जाएगा. Is it not? So therefore, very correct. Many people have said the correct answer. Correct answer is D. Interrupt from CPU temperature should be of high priority. तो यही है बच्चों 3-4 sample questions. इस तरीके के questions आए हैं. Other questions we shall try to see in the next class also. So please do attend the class. Very important discussion. Foundational concepts like process और threads के हम discuss करने वाले हैं next class में, और कुछ problem solving भी इसी तरीके के हम करेंगे. At the end of the session, हर session में हम कुछ ना कुछ problems work out करेंगे so that you can test your basic understanding. ठीक है ना बच्चों? Because you have another session at 8 PM, some people are saying, so kindly go ahead,
we'll stop now. Thank you so much for attending the class. Thank you. Take care. Good night.